Okay, so good morning once again, everyone. You are welcome in social science lecture. We will continue with our civics chapter number third. Why do we need a parliament? So we have already discussed about democratic government. Then parliament is needed in democratic government. Then we discuss about the election process. Okay, then houses of the parliament. Today we are going to discuss about the functions of the parliament. Okay, so what are the different functions of the parliament? So yesterday we learned that the first function is to form a government and dissolve a government. So after the general elections, the party winning more seats, okay, more than 50% of seats, and also the more number of seats than others gets the chance to form the government. Then if the government doesn't work properly, then parliament also have the option to dissolve it. For that, a special resolution has to be passed by both the houses of the parliament. Okay, then the entire council of ministers have to resign along with prime minister. Okay, so we also discussed yesterday about coalition government, that when no party gets the proper majority, okay, then they used to combine two or four parties or more than two parties join together to get that majority mark, that is 273 seats in the Lok Sabha, to form the government. Such a government is known as a coalition government. So let's move on. Representation of the electorate means all the voters who have elected the government, they form the electorate. They are known as electorate, and therefore the representatives actually represents the electorate, means the people. So today we will learn about legislation. So let's start. So the process of legislation or making laws is the most basic day-to-day function of the parliament. The parliament is empowered by the constitution to legislate on all matters that are enumerated in the union list and concurrent list of the constitution. So this is the basic day-to-day work of the parliament, that it forms laws or discuss the laws and policies. The parliament and the state legislatures have joint jurisdiction over the concurrent list. However, in case of conflict over any law made under the concurrent list, the union law will prevail upon the state law. Under certain special circumstances, the parliament can make laws for the state. So students, let's clear this one. So what we are talking about this list? What are these lists? ये lists क्या है आखिरकार? So the can explain you. So the lists. So there are three lists on which the parliaments or any other legislature in India can form the can make laws. Okay, so there are three lists provided by the constitution. So these lists are provided by the constitution, on which various governments have the jurisdiction power to jurisdiction means power to make laws. First is the union list. Second is state list. Third is concurrent list. Okay, students. Okay, so these are the three lists. Now, in union list, which only
यूनियन और सेंट्रल दोनों एक ही के लिए यूज होते हैं. दिस गवर्नमेंट कैन फॉर्म laws. On this one, only state government. On concurrent list, both the governments can form laws. Okay, so it is clear from here that there are three lists provided by the constitution on which laws can be made. There are some subjects, topics होते हैं इनमें जिनके ऊपर यूनियन लिस्ट में जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बनाएगी. स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट. कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट हैं उनके बोथ द गवर्नमेंट्स कैन मेक लॉज, दिस वन एंड दिस वन. but if there is any dispute, then the law made by the center will be applied. Okay, so after that then there are some subjects which left out. इसके बाद कुछ जो सब्जेक्ट्स बच जाते हैं उसके ऊपर लॉ फॉर्म करने का हक किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का. उनको बोलते हैं रेजिड्यूरी. रेजिड्यू का मतलब ही होता है बचा हुआ. तो रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ फॉर्म करने का किसका होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, सो इस तरह से आप देख सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल बिकॉज इट कैन मेक लॉज almost on all the subjects except few subjects which are in state list. So everyone, is it clear from this diagram that what are the different lists on which the parliament can make laws? So in this way you can see parliament can make laws on the subjects which are listed in the union list. It can also make laws on the subjects mentioned in the concurrent list, and in those subjects also where which are not mentioned in any of the lists. इन तीनों लिस्ट के अलावा जो सब्जेक्ट्स बचते हैं जो इसमें मेंशनड नहीं है उनके ऊपर लॉ बनाने का हक भी किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का. इन दिस वे सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल दैन द स्टेट गवर्नमेंट. ओके, so let's move ahead. So next is keeping the executive in check. The executive actually this is also known as the गवर्नमेंट. जो रियल गवर्नमेंट है वो एग्जीक्यूटिव ही है. ओके, तो पार्टी जीत के आई है उनके मंत्री परिषद जो है उसी को हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं. ओके, सो कहीं सरकार अपने पावर का गलत इस्तेमाल ना करे या गलत कानून ना बनाना स्टार्ट कर दे, उसको रोकना. चेक का मतलब होता है टू स्टॉप. उसको रोकने का काम भी पार्लियामेंट का है. सो द पार्लियामेंट कीप्स अ डे टू डे वॉच ओवर द एक्टिविटीज ऑफ द एग्जीक्यूटिव. In a parliamentary form of government like India, the executive is accountable to the parliament for all acts of omissions. Omissions क्या होता है? गलतियां. Omissions and commissions. So executive is totally, or the government is responsible to the parliament, to the legislature. So the Lok Sabha may remove a cabinet out of power by a vote of no confidence. तो जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था वो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस. अगर ये पार्लियामेंट के अंदर पास हो जाता है देन द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद हिज कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैव टू रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस. तो फिर फ्रेश इलेक्शंस होते हैं. ओके, सो जो मेजोरिटी नंबर होता है 273 का, अगर 5 साल के दौरान कभी भी इससे कम नंबर आ गए गवर्नमेंट के लोकसभा में, opposition can remove the government by with the help of this vote of no confidence. Okay,
नाउ मॉनिटरिंग द एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक फंड्स। पब्लिक फंड्स होते हैं जो सरकार के खर्चे होते हैं, गवर्नमेंट के खर्चे वगैरह, कि कहाँ गवर्नमेंट खर्च कर रही है, कहाँ पैसा, उसको खर्चे पर को मॉनिटर करने का काम भी पार्लियामेंट का होता है। सो पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर फाइनेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चेक्स to prevent the executive from assuming arbitrary powers. Okay, the executive cannot spend any money without parliamentary sanction. The annual budget prepared by the cabinet is submitted to the parliament for approval. Parliament also approves all proposals of the union government to impose taxes. Money bills can originate only in the Lok Sabha. तो पार्लियामेंट का ये काम होता है कि वो गवर्नमेंट के खर्चे के ऊपर ध्यान रखे। टैक्स लगाना, कितना लगाना, ये भी पार्लियामेंट का काम है। वो एग्जीक्यूटिव को अलाउ नहीं करती बिना मतलब के खर्चे करने का। ठीक है। सो बजट, एक जो बजट होता है वो इसीलिए बनाया जाता है, उसको पार्लियामेंट में अप्रूव करना जरूरी है। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक एंड मेन फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट।